Okay, so we have already reviewed the basic concept of electrolysis. So this shouldn't be a problem for us. So let's get started. Graphite is often used as electrode in the electrolysis of solution. Okay, which particles are involved in conduction of electricity by graphite? So the key is that they should be in the graphite. So what do you think? Graphite जो है वो बिजली कैसे conduct करता है? Through free Free electron. electrons. Very good. Through free electrons. So graphite has free electrons, and those are the only thing responsible for conducting electricity. The ions are fixed in place and they cannot do, and they are positive ions. लेकिन वो बिजली conduct नहीं कर सकते. In which circuit does the bulb light up? So of course that depends on कि बिजली conduct करेगा कि नहीं करेगा. Secondly, it depends on the reactivity. Notice, first thing you should notice is that there is no battery. So इसका मतलब है कि electrons should transfer from one more reactive element to less reactive element. तभी ये possibility है. And secondly, the electrolyte should be conducting electricity. अगर कोई ऐसी चीज होगी जो बिजली conduct नहीं करती, तो फिर बिजली conduct नहीं होगी. So in A we have copper and copper. तो copper को तो electrons नहीं देगा ना. So that's not possible. In B, zinc is more reactive than silver, so electrons will go from zinc to silver. But the problem is कि यहाँ पे you have a solid, so circuit complete ही नहीं होएगा. You need this to conduct electricity as well. So solid sodium chloride does not conduct electricity. It has ions, but they're not free. In C, we have ethanol, and ethanol being a covalent substance does not have free ions. So even though zinc copper से ज़्यादा reactive और electron जा सकते हैं, but because of this not conducting electricity, circuit complete नहीं होएगा. That leaves us with this, where sulfuric acid is able to conduct electricity because it does have free ions, and copper will transfer electrons to silver because copper is ज़्यादा reactive. So D is the answer. If you feel like you have a question anywhere, फौरन unmute करें, मुझे सवाल पूछें. In the extraction of aluminum by electrolysis, oxide is dissolved in molten cryolite. Cryolite का कल मैंने आपको बताया था that there are two main reasons we use it. It dissolves the aluminum oxide, and secondly, it lowers its melting point. Iman's question is that do all covalent compounds don't conduct electricity? So as pure substances, they don't, but acids, for example, they have covalent bonding, but when you dissolve them in water, they form ions. और उसकी वजह से they can conduct electricity. So it all comes down to कि उसके पास ions हैं या नहीं. So some of them will dissolve in water to form ions, and that is when they will conduct. Aluminum is deposited at that. So aluminum forms positive ions, so they will go to the negative electrode. So आपका आंसर इन दोनों में से कोई होगा. It can be deduced that aluminum is dash in reactivity series compared to sodium. So sodium discharge नहीं हो रहा, aluminum हो रहा है. इसका मतलब है कि aluminum is less reactive because the second rule of electrolysis that we talked about was कि less reactive ion discharges. अगर आपको rules याद नहीं है, so go back to your notes जो कल मैंने आपके साथ share किए थे, या मैं इसे बताता हूँ. First rule was reactive anode will ionize, and second rule was that less reactive ion discharges. और इसमें हमने एक तीसरा रूल देखा था कि if concentrated then chloride discharges. ठीक है, तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में हमने देखा था कि या हाइड्रोक्साइड होता है या हेलोजन होता है. सो अगर हाइड्रोक्साइड होगा तो डाइल्यूट के केस में डिस्चार्ज होगा, और ये होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में डिस्चार्ज होगा. तो ये तीन बातें जो हमें पता होनी चाहिए. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी नो द आंसर इज डी. A concentrated aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed. Concentrated है, that is the key word. ठीक है, इसका मतलब है कि chloride ion है और chloride ion ही discharge होगा in this case. Even though hydroxide is there, but chloride concentrated sodium chloride. तो let's see, यहाँ से ये discharge होगा क्योंकि ये less reactive है, और यहाँ से ये discharge होगा क्योंकि ये less reactive है. Oh, sorry, and obviously because of concentrated solution. तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन. ए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन.
Next question. What is observed during the electrolysis of copper sulfate using carbon electrodes? Let's see. हमारे पास आयंस कौन से हैं? कॉपर आयन है, सल्फेट है, H पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड. तो पॉजिटिव आयंस में ये लेस रिएक्टिव है तो ये डिस्चार्ज होगा, और इन दोनों में ये लेस रिएक्टिव तो ये डिस्चार्ज होगा. तो इसका मतलब है कॉपर आयन विल लीव द सोल्यूशन, तो उसका ब्लू कलर खत्म, और इससे मिलेगा हमें कॉपर मेटल. कॉपर मेटल का कलर होता है पिंक, सो हमें पिंक सॉलिड मिलेगा. कहाँ पे? कैथोड और एनोड? व्हिच वन डू यू थिंक? कैथोड और एनोड? कैथोड, बिकॉज कैट आयन है ना, तो वो कैथोड पे जाएगा. एनाइन गोज टू एनोड, उनका नाम ही इसी वजह से ऐसे है, दैट कैटाइन गोज टू कैथोड एंड एनाइन गोज टू एनोड. ठीक है, दैट्स हाउ दे गेट द नेम्स. सो दिस शुड गो टू द cathode and this should go to anode, and when it does it produces oxygen gas. तीसरा, कॉपर आयन निकल रहा है तो ब्लू कलर भी फेड हो जाएगा. सो लेट्स सी. पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन एनोड, ये बात गलत है, कैथोड है. बबल्स फॉर्म ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बबल्स तो ऑक्सीजन के हैं और वो तो एनोड पे जाएगी, तो ये बात गलत है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए. The color of the solution fades. Yes, color is because of this thing. And because this is leaving, the color will fade. Negative electrode becomes smaller. Negative electrode का हमने पूरे सिलेबस में कोई केस नहीं देखा जहां पे it becomes smaller. Positive electrode को हमने देखा है becoming smaller. क्यों? क्योंकि वो खुद reactive होता है और वो dissolve हो जाता है. ये हमारा फर्स्ट रूल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, दैट रिएक्टिव एनोड विल आयनाइज. लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड का होना हमने जानते ही नहीं है. इन विच सर्किट डज द बल्ब लाइट अप? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया. द एक्सपेरिमेंट शोन इज यूज्ड टू टेस्ट पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिस्टल्स. लैम्प डज नॉट लाइट. ऑब्वियसली भाई, डज एनीबडी नो व्हाई लैम्प डज नॉट लाइट अप? Why do you think the lamp does not light up? The lamp will light up if the circuit is complete. यहाँ पे circuit complete क्यों नहीं है? It is because potassium bromide does not have free ions. और इस वजह से does not have free ions. तो वो solid है, और solid चीज में free ions नहीं है, तो वो conduct नहीं करता. But you add water to it, it will dissolve and it will conduct electricity. And that is what it does. The lamp lights because now it has free ions. And the word is ions, not electrons. So the answer is D, oppositely charged ions. क्योंकि positive और negative दोनों ions dissolve होते हैं और दोनों ही free हो जाते हैं. Which element requires the largest number of electrons for 1 mole of metals to form from its aqueous ions? Okay, ions को देखते हैं. Aluminum is Al3+. इसका मतलब इसको 3 electrons चाहिए. There are 3 moles of electron for 1 mole of aluminum. This is calcium, copper is copper 2, and sodium is this. So clearly we can get it from the periodic table that it will be aluminum. It needs the highest number of electrons. Copper का obviously you need to memorize because copper 2 भी होता है, copper 1 भी होता है, but दोनों aluminum से तो कम ही है ना. Which changes are observed during the electrolysis of copper sulfate using copper electrodes? यह भी हमने किया था. हमारे पास आयंस थे. कॉपर आयन था जो कि कॉपर बना रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन था जो कि ऑक्सीजन बना रहा था. ऑफ कोर्स यहाँ पे पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं. And you were getting H2SO4 at the end. So the color was fading away. Copper pink solid was being made on the cathode, which is negative. So ये statement ठीक है. Bubbles form on the positive electrode. ये बात भी ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन आएगी. And color of the solution does not change. ये बात गलत है. Color goes from blue to colorless. ठीक है. But अगर हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड्स हों तो क्या ये बात ठीक है? ग्रेफाइट के केस में हमने देखा that the blue color fades, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड के केस में ऐसा नहीं होगा. Because the moment you use copper electrodes, the first rule also applies. Reactive anode ionizes. So ये जो reactive anode है कॉपर का, it will form its ions. तो इसका मतलब हुआ कि ना बबल्स बनने
क्योंकि ऑक्सीजन गैस बनेगी नहीं. सो ग्रेफाइट के केस में ये दोनों बातें ठीक हैं, बट कॉपर इलेक्ट्रोड्स के केस में क्या होगा अभी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर विल डिसॉल्व and copper will form copper ions. So color of the solution does not change. ये बात ठीक है. क्यों? Copper ions आ गए हैं. अच्छा, पिंक सॉलिड डिपॉजिट, ये बात भी ठीक है क्योंकि कॉपर मेटल बन रहा है. बट बबल्स फॉर्म नो, ये रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि एनोड पे तो एनोड खुद डिसॉल्व हो गया, तो नो आयन विल डिस्चार्ज, इट विल बी द एनोड दैट डिसॉल्व्स. फर्स्ट रूल लग रहा है, तो ये बात गलत है. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस वुड बी बी. सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड्स के होने की वजह से ये रिपीट हो रहा है. What is the correct equation for the reaction taking place at the negative electrode when molten magnesium chloride is electrolyzed? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पॉजिटिव आयंस की बात हो रही है. लेट्स सी, हमारे पास मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे, और मोल्टन है तो यू डोंट हैव वाटर, सो दिस इज द ओनली पास आयन दैट गोज टू negative electrode. So magnesium gains 2 electrons to make magnesium. D is the answer. What are the correct anode and cathode products when aqueous copper sulfate is electrolyzed? Again, you have copper electrodes. So anode will dissolve and make copper ions, or obviously it will lose 2 electrons. At the cathode, you have the second rule applying. Copper ion will gain electrons and make copper. So first of all, जो कलर इसकी वजह से फेड होना है वो इसकी वजह से दोबारा बन जाना. The copper metal is pink, वो deposit होगा. And that's all. At the anode you get copper ions, at the cathode you get copper metal. तो हमारी ऑप्शन होगी A. Concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed. The key word here is concentrated. Which statement about this electrolysis is correct? So यहाँ पे हो क्या रहा है? You have sodium ion, you have chloride ion, you have hydrogen ion, you have hydroxide ion. Discharge होगा ये और ये. This will give us hydrogen gas, this will give us chlorine gas, और पीछे हमारे पास sodium hydroxide बन जाएगा. Which statement is correct? Chloride ion travels to the negative electrode. No, because chloride is negative. Negative electrode पे वो repel होगा. Electrons travel through the solution to sodium ions. No, that will mean sodium is discharged. That's not happening. Sodium ion stays. Gases are given off at both electrodes. That is true. Hydrogen gas, chlorine gas, ये बात ठीक है. Sodium is formed. No, sodium is not formed. Hydrogen is formed. Which occurs during the electrolysis of dilute sulfuric acid? Again, what's happening? You have sulfuric acid. So H positive ions, sulfuric ions, sulfate ions, sorry. And you have water, H positive and OH. So ये तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ऑप्शन ही एक है और यहाँ से ये. This will form hydrogen gas. This will form oxygen gas. And that means you're running out of, technically you're just removing water. क्योंकि देखो ना, H positive ion भी water से आ रहा था, hydroxide ion भी water से आ रहा था, तो they're both gone. So you're left with, again, H2SO4, but with less water. So the solution will obviously have less water. If a dilute solution and you remove water from it, it will become concentrated. So knowing this, let's look at the options. Hydrogen and oxygen are formed in the ratio 2:1. वो बात ठीक है, but it will always be H2O, not hydrogen will always be double of hydrogen. तो ये 2 बनेगी, ये 1 बनेगी. So ये इसने trick किया हमें. Hydrogen formed at the positive electrode. No, hydrogen ion is positive, it will go to negative. Positive तो उसे repel करेगा. Oxide ions कहाँ से आए? We have hydroxide ions. Dilute acid becomes more concentrated. ये बात ठीक है because you're removing water technically. The apparatus shown is set up to plate a steel key with copper. ठीक है. This won't work. It will not work क्योंकि ये steel key
dissolve हो जाएगी. Remember the first rule? A reactive anode ionizes. या reactive anode forms ions. ये positive है, ये ions बना लेगा, तो ये तो की डिसॉल्व हो जाएगी. हमने कॉपर को प्लेट करना है, इसका मतलब है हमें कॉपर को पॉजिटिव करना चाहिए ताकि वो डिसॉल्व हो, और इसको नेगेटिव करना चाहिए ताकि इस पे डिपॉजिट हो. The answer is D. Because जो मर्जी आप कर लें, फर्स्ट रूल, द बेसिक रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यू कैन नॉट वायलेट देम. वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? रिएक्शन जल्दी हो जाएगा. रिप्लेस द सॉल्यूशन विद सल्फ्यूरिक एसिड, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, कॉपर ने अभी भी डिसॉल्व होना ही होना है. इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज द वोल्टेज, रिप्लेस द, कुछ भी नहीं होना. अनलेस यू रिवर्स इट, you will lose your steel key. Copper to sulfate is electrolyzed using, ये आसान है. Now I'm going to go to theory questions. I would suggest कि बाकी MCQs आप खुद try करें, और अगर कोई problem आती है तो we have the group, discuss it in the group. The table shows some of the properties of element 2, or elements in group 2. Explain why the elements in group 2 have similar chemical properties. Why does anything have similar chemical properties? Chemical properties किस पे depend करती हैं? Upon electrons, Which electrons? Not all electrons. the valence electrons. Valence electrons, very good. So they have same number of valence electrons. If you want, you can specify that they all have 2 valence electrons. Yes, Ryan and Iman, you're both correct. Very good. Explain why it is easier to predict the atomic radius of radium than the melting point of radium. Let's see. ये trends वाला question है. अब यहाँ से देखते हैं. We can see that this is increasing, 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 increasing. So obviously ये भी increase करेगा. Even if किसी ने दुनिया में रेडियम को नहीं देखा, we can still predict कि based on this trend उसकी value इससे ज़्यादा ही होगी. And we have such strong belief in this कि अगर कभी मिलेगा तो we are very confident कि ऐसा ही होगा. But ये क्या कर रहा है? This is less, then more, then less, then less. कोई trend ही नहीं है. हमें क्या पता अगला increase कर जाए, decrease कर जाए. We don't have a experimental proof or any prediction. तो हम इसको confidently predict नहीं कर सकते. So why it is easier? Because atomic radius has a trend, but melting point does not. Many students, when they answer the question like this, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ एक बात करते हैं कि जी atomic radius has a trend और यहाँ पे रुक जाएंगे. Please talk about the whole thing in the question. Discuss everything that's there. उसने melting point की बात की है ना, उसने comparison खुद किया है, तो आप भी comparison करें. आप भी उसको बताएं कि melting point में problem क्या है. What is the electronic configuration of magnesium ion? Magnesium atom क्या है? 282. क्यों? Magnesium में 12 electron. So this is what you see in the periodic table. So the 12, the smaller number, is always telling me about atoms in a neutral, electrons in a neutral atom. So अब ion बन गया तो the last shell is gone. You're left with 2 and 8 only. Make sure that if you do any rough working, जैसे मैंने ये एग्जाम में की है, तो आप बस एक लाइन लगा दें उसके ऊपर. Just that. एक लाइन काफी होती है for the examiner to know कि ये चेक नहीं करना, वरना एग्जामिनर इनको भी देखना शुरू कर देगा. Of course, in this case कोई नुकसान नहीं है हमारा. Magnesium is produced by the electrolysis of molten magnesium chloride. Construct equation for the reaction taking place. Let's first identify what ions we have. We have magnesium ion and we have chloride ion. So magnesium will go to the negative electrode and chloride will go to the positive electrode. Okay. Magnesium will form magnesium, chloride will form chlorine. How? On this side I have 0 charge, so मुझे इसको भी 0 करना है by adding 2 electrons. So ये +2 है, ये -2 है, 0 हो गया. On this side I have -2 क्योंकि 2 chloride have -2 और इधर 0 है, तो 0 - 2 करना पड़ेगा, यानी कि I'll have to add 2 electrons.
So this loses electrons, this gains electrons. Magnesium reacts with copper sulfate in a redox reaction. ठीक है, हमें नजर आ रहा है. Let's put the charges there. So magnesium is 0, copper is 0. 0 because they're elements, anything in the element form has a neutral situation. By the way, why is it neutral? 2 mark का question आ जाता होता है इसके ऊपर. It's an element. Doesn't answer why it is neutral. The number of electrons are equal to the number of protons. Only gives half the answer. That is good, but it's only half correct. Still doesn't answer where the charge comes from. Here's the thing. We are assuming that the examiner knows the positive charge comes from proton. Let's not assume it. Let's first tell the examiners that protons are positive, electrons are negative. And it has equal number of protons and electrons. Get it? There's a 2 mark question because first you have to specify कि charge का electron या proton से ताल्लुक क्या है, वो भी तो बताना है हमें. And that's what we'll write here. Okay, in this question, which particle is reduced? We can see whichever has lost its charge. So copper plus 2 से 0 पे आया, so that is reduced. So we'll say Cu2 plus, or we can write copper 2. Please don't write copper, because copper यहाँ पे है ही नहीं. Copper यहाँ पे है. तो copper तो react ही नहीं कर रहा, copper तो product है. This is the reactant and this is copper 2, not copper. So explain your answer. Whenever you're explaining it, please do not write about charges. Mention electrons. ठीक है? So we'll say it gains 2 electrons. We will not say that it oxidation state, yeah, its valency goes from plus 2 to 0. We will not say that. We will say that it has gained 2 electrons. Magnesium reacts with aqueous copper sulfate. Why is this a redox reaction? Again, magnesium loses 2 electrons and copper ion gains 2 electrons. अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप कह सकते हो that magnesium is oxidized and copper is reduced. And I would suggest कि आप हमेशा जब भी ये बात करें साथ में लिखें कि magnesium is oxidized by losing electrons and copper is reduced by gaining 2 electrons. ताकि एग्जामिनर को आप बताएं कि ठीक है, मुझे पता है ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन से क्या ताल्लुक है. बिकॉज ये भी बात पूरी नहीं है, ये आधी बात है. ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसका रीडॉक्स होने से क्या ताल्लुक है. तो यहां भी अगर ये भी आप लिखते हैं तो आप बताएं दैट इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इज ऑक्सीडाइज्ड. Construct the ionic equation. Okay, how do you write ionic equation? You write everything that is aqueous, you write it as ions. So magnesium ऐसे कैसे रहेगा, यहां से देख रहा हूं मैं. Copper will form ions, sulfate will form ions because they're aqueous. Magnesium will form ions, sulfate will form ions, and you have copper. अब magnesium और sulfate जो है ये दोनों, इसमें sulfate is spectator, तो हमें इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है. Pure copper can be made by the electrolysis of copper sulfate using one pure copper electrode and one impure copper. Okay, again, remember the rules. Reactive anode ionizes. And which ion do we want to ionize? Impure copper. तो इसका मतलब है कि हमें उसे anode पे रखना है. So anode is positive, cathode is negative. So we'll say you have copper sulfate solution, you have pure copper here, you have impure copper here, and that is how we can clearly do this. ठीक है?
Don't spend too much time on making a good picture. Drawing की कोई marks नहीं है. The marks are for correct labeling and for just showing the setup. Again, why did I put impure copper as positive? Because I wanted to dissolve, I wanted to make ions, which ions will be coming here and plating this. What observations are made when adding aqueous ammonia? अच्छा ये अभी हमने नहीं पढ़ा. Blocks of magnesium are attached to underground pipes made of iron to stop them rusting. This is sacrificial protection. Remember? Explain how magnesium stops the pipes rusting. So we'll talk about that magnesium is more reactive than iron, so it loses electrons or it reacts before iron can. तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जल्दी react कर जाता. ठीक है? And then of course you can replace the magnesium blocks later on. Sphalerite is an ore containing compounds of zinc. One of the compounds is zinc blend, ZNS. Calculate the mass of zinc and 30 tons of ZNS. Moles का question है. बहुत simple है. We have stoichiometry here. हमारे पास इसका mass है नहीं है और इसका mass है. So हम equation बना लेते हैं. हमें पता है zinc और ZNS में एक एक mole का तो relation है. So zinc के AR को लिख लेंगे. I think zinc is 65 if I'm not wrong. Yes, 65. So 65 grams of zinc produces 65 plus 32. So 87 grams of zinc sulfide. So 30 tons, so मैं gram की tons सोच लेता हूँ, will produce X. And you can clearly relate them. Okay? And that's how you do this. ZNS is heated in air. Zinc oxide and sulfur dioxide form. Construct the equation. So again, this process is called roasting. We are burning it in oxygen. So air का मतलब है कि supply of oxygen. So ZNS plus oxygen, it burns zinc, sulfur, and zinc oxide and sulfur dioxide is made. Of course, to do this reaction, you need to know कि zinc is +2. और अगर आपको नहीं भी पता, तो आप sulfur periodic table से देखें group 6 में तो -2 होगा, जिसकी वजह से ये +2 हो जाएगा. Do not write this as your final answer. This is your final answer. लेकिन working के लिए वो कर सकते हैं आप. Suggest one environmental problem involved with heating ZNS. Look at this thing. Sulfur dioxide is a strong reducing agent. And secondly, sulfur dioxide dissolves in water to make acid. So हम लिखेंगे that the problem is acid rain. Detail देने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ suggest कहा है, उसने explain नहीं कहा. Zinc oxide is reacted with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate. ठीक है. Zinc oxide being amphoteric. Remember, zinc, calcium, chromium, lead, इनके oxide amphoteric होते हैं. It reacts with sulfuric acid as base, obviously. Forms water plus zinc sulfate. Pure zinc is made by electrolysis of zinc sulfate. Zinc forms at the negative electrode. यानी कि यहाँ पे zinc बनेगा. कैसे बनेगा? Zinc ion से बनेगा. By gaining two. Hydroxide ions react at the positive electrode. सारा क्वेश्चन तो उसने हमें बता दिया. So hydroxide ions will obviously make oxygen plus 2 water plus 4 electrons. And we've done it. Oh, sorry, this should be 4. बन गया. Zinc is used to galvanize iron. ये भी हमने कल पढ़ा था. Galvanizing is that you get a layer of zinc on iron, but ये electroplating नहीं, सिर्फ iron को molten zinc में dip कर दें. Zinc has low melting point, तो वो ज़्यादा energy नहीं लगती उसमें. So we just dip iron in zinc और उसके ऊपर एक layer आ जाती है. And that is how zinc forms a layer, acts as a barrier between oxygen and iron. Oxygen क्यों जरूरी? Because iron will rust if it reacts with oxygen in presence of moisture या in presence of water. So जब iron के ऊपर zinc की layer आ जाएगी तो oxygen उससे react ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखें ना ये iron है let's say और इसके ऊपर ऐसे zinc की एक layer है, तो जो oxygen इसके साथ react करना चाहता है तो वो इस layer से collide करेगा, iron तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इसकी वजह से वो react नहीं कर पाएगा. And that's what we have to write here. Okay.
So I hope it's clear to everybody how the questions are going to be and how you can attempt them. Okay, take care. Allah Hafiz.